आप मेरे भैया जैसे हैं सो मतलब आपने कवर करने के लिए सब भैया बुला दिया कि ज्यादा डांट ना लगाओ, है ना? कोई बात नहीं। आपका पर्पस क्या है इंटरव्यू एज अ वो अच्छा स्टूडेंट? व्हाट इज इंटरव्यू फॉर मी? डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू फॉर मी? आई नीड टू सेल माई सेल्फ टू द इंटरव्यूअर। सब वही आंसर्स देने वाले हैं, बट अगर आपने 5 से 6 बार उनको ये बोल दिया ना, मुझे आपकी कंपनी में जाना है, ट्रस्ट मी, और कोई ये नहीं कर रहा होगा, मार्क माय वर्ड्स, किसी की दम नहीं आपको रिजेक्ट। अगर 100 में एक को भी सिलेक्ट करना होगा ना, आपको करेंगे। हेलो रिकिता, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? I'm also good. Could you please tell me something about yourself? Yes, sir. My name is Rikita Kole, and currently I'm pursuing BTech in Information Technology from MCKV Institute of Engineering, which is located in Howrah. I was born in Kanpur, but I was brought up in Howrah itself. My schooling, everything is in Howrah. And I come from an educated means a family which supports education and keeps education as the topmost priority. I have father means my father is a retired mechanical engineer, and my sister is currently posted in Hong Kong, and my mother is a homemaker. And my hobbies include watching podcasts and listening to music and also reading. And I like to learn something new every single day, like typing, even computer typing. There's a course I'm doing it. And I'm well versed in C++, and DBMS. I had done an internship, like a project from Information National Informatics Center. And I want to be a part of an aspiring multinational company as yours. And want to lead a project in the future. And means my long-term goal consists of like mentoring whatever I will gain experience or mistakes. I want to mentor my upcoming generations in the long run. So Could you please tell me more about your programming skills? Like, where do you rate yourself at programming? What all things you are good at, and how you developed interest in programming? yes, sir. I think that programming, there is no end in learning. So I will rate myself 5 out of 10 because it's an ocean. You need to keep on learning and learning and learning. So I have started programming from my first year itself, but still I feel that I am learning. There's no end to it. So I will rate myself 5. And yeah, according to the company needs, I can mold. I know the basics, I know the foundation, so the C, so I can mold according to the company's need. Okay. Could you please tell me how dynamic memory allocation is done in C language? Yes, sir. We use malloc function. Using malloc function, we dynamically allocate memory. Like there's a pointer, and that pointer we just typecast that pointer, and in heap it gives some memory. Like we can use also size of operator inside the malloc function, like size of then int, and then it will give us some space in the heap, Okay. and we can later on free it. Okay. What is a pointer, and what is the meaning of data type of a pointers? Pointer is a variable which stores address of another data type. So, and it is generally declared like we declare it as int star pointer, and that int is referring to the data type of the variable whose address it is storing. Okay. So, So since it stores the address, yeah, address is anyways independent of the data type. Okay. So yes, address of your house and address of my house will be the same same, lengthwise, irrespective of the yes, house size. It is yes, not like small houses will have small address and big houses will have big address. So every pointer variable takes a constant memory irrespective of the data type. Do you agree with me? So what was the point of introducing data type in pointers? actually when we dereference it, then
the pointer stores the base address of the variable, base address of the variable. So suppose I'm storing a pointer to int. So it will take 2 bytes. But if I take, so it will take 2 bytes. So suppose I write 2, then that 2 in that variable, that 2 will be stored in a binary form like 0001111 like that. But if that integer pointer is character type, then it will go only travel that one space, first bit, because character takes only one bit. So it will give us wrong output if we do not initialize pointers with data types. So that's why while dereferencing it, it will give us wrong output. Okay. What is the difference between an entry control loop and an exit control loop? Yes, sir. Entry control means first it will check the condition and then it will go inside the loop. Like our while loop, then for loop, these are entry control. First they will check and then means they will check if the condition is true, then it will execute the rest of the program. But whereas on the other hand, in exit control, first one loop will be means the program will be executed first, and at the end the condition will be checked, and if it is true, then again it will go back and it will print the execute the program. So in exit control, at least one time the program will run inside the loop, but in entry control the program will not run if the condition is false. Okay. Suppose I am making a program. The purpose of the program is I want users to enter their age. Okay. If the age is a valid age, means if it is a positive age, then the program will execute successfully. But if it is not a valid age, it will not show any error. It will keep you asking your age until and unless you enter a valid age. Suppose you have entered a wrong age. For example, you have entered -4. It will again ask what is your age. Then I enter -6. It will again ask what is your age. Now I entered +7 or only 7. Then it will say, okay, the program is executed successfully. So how can we make this program? I just want the logic part. While we need to give in the condition that age is greater than 0, because age cannot be negative. So age is greater than 0, and in age we are taking the input from the user. So there, if I give any negative, then of course it will not run. It will not enter But, the loop itself. but I want it to run. I want the loop to run infinitely until and unless the age is a positive number. Okay. I don't want, if you have entered a wrong age, I don't want it to show error message. I want the loop to run again and ask the age again, run again, then run again until we are having a positive age. Then while This is a very basic program. yes. While age is equals to Okay, leave. if What? Yeah, continue. um, if age is less than 0, then we can write that print number greater than 0, and again we can give a nested loop and we can run it. Use a nested loop and run it. What is a null pointer? A null pointer is a pointer which does not stores any address of any variable. Okay. Suppose I declare a pointer as null. I declare a pointer of any type, integer, character, void, any type. Okay. So for example, I declare an integer pointer, int star a. Okay. And now I equate this a to 0. Okay. I fill 0 value in that. Now will 0 be stored in that, or it will behave as a null pointer? 0 is no, 0 is not a null pointer.
it will point to some other address, maybe in our operating system or some other paths it will point. So it will point to any random address, right? Not it, yeah, wrong address, yeah. Wrong address we can see. Okay. Now what is a dangling pointer? Dangling pointer is a pointer which points to some address that is not existing, or that has been freed or deleted. That is, yeah. Like uh, suppose I give an address to my friend that I stay here, but later on I have shifted to some other place. So if the friend goes there at the address I have given, so he will not find me there because I have already shifted to some address. So similarly, dangling pointer is such type of pointer which is pointing to some address that is not existing only. What is the default return type of main function? Main function, int. Okay. What is a static variable? Static. Okay. Static is a type of a storage class, which uh, if we initialize a variable like static int a, then we can access a in that file through all the programs in that file we can access, but not some other files. Yeah, so we should initialize it. Even if I write static at the end as well, like after writing all the functions above, even if I write static at the end, like static int a, then also it can run. Okay. The program Do will you, run. do you have any knowledge of object-oriented programming? Yes, sir. What is the difference between data abstraction and data hiding? So data abstraction, more or less they are same. Like data abstraction also means hiding the basic, means all the details and showing the basic things like the necessary things, and hiding all the details. Like in ATM machine, if we go, then we just need to type the pin and money will come out. But the user does not have to know all the details, what is going in the background. And similarly, abstraction is also hiding is also synonymous, like but You mean to it's say both we are one use and the this same thing term. only? Yes, sir. You mean to say both are one and the same only, right? Yeah. Okay. How can we find second largest element in an array? You're not allowed to sort the array, but how can you find the second largest element? Okay. Second largest element. Sir, I had actually performed this question by sorting. Um so Sorting will anyways take, first of all, your n-log and time complexity will be acquired in sorting. We can yes. do it in order of n complexity without, using the sorting algorithms. So first we need to find. We can easily find the largest one, and then uh, then we can compare like what is nearest to that largest one by taking the difference. If I take the difference, like I have the largest, I will find the largest, and with the rest of the elements I will find the difference with the other elements. And if and I will print out the element which has the lowest difference with the highest one, with the maximum one. That time can do. Okay. Why not make a function which returns the largest element of the array? Okay, you have the largest element in the array. Okay, now shift that largest element to the last and the index of the last element to that particular index. For example, your largest element is at index number 2. Hmm. Now shift the element at index number 2. This largest element should move to the last. The last one should move to your index Yeah. number 2. The swap will happen. And now again execute the same program from 0 to n minus 1 instead of n. Yeah. Yes. That is also So easiest. you won't have to write programs two times because you are using two different logics.
And again, number of subtraction operators will be used, right? Okay. Yes. I give you an integer value. You have to tell me whether it is a palindrome number or not. Okay. So how can we make a program? Suppose user enters any integer value. You have to find whether it's a palindrome or not. Okay. Palindrome. We need to first. We know the length, so I will traverse up till length by 2, and from backwards also I will traverse. How Uh, can we find the length? This is not a string. This is an integer value, right? Acha, yeah, yeah, zero value. Uh, so if the means I will first find the modulus, and if the mod means the number I will divide by 10. So whatever the remainder I will get, I will compare it with the first digit, and then I will do that process, repeat that process again and again. And if all the second last and means the back integers and front integer matches, then it is a palindrome. Otherwise, it is not a palindrome. Okay. Um, Suppose I am a fresher. I don't know much about. Suppose I am a non-computer science engineer. Okay. I have no knowledge of database and SQL. So suppose you are a trainee at our company and you are asked to train this guy database and SQL. So first of all, I want you to explain me what database actually is, what is the need of database, importance of database, what we do with SQL, and I give you roughly 2 to 3 minutes for the same. Okay. You can start. Okay. So first of all, I will explain the person that what is data. Like data is a collection of whatever means collection of information or knowledge about something, and from that we extract information. So data is main thing, and based on our needs, information may vary. So and that data we store in a container. Just imagine like a container. That is the database where everything, all the datas are stored. Now we can use file system, but database is more efficient in storing large amount of datas, like in institutions, big institutions, big companies. Like for ourselves, we do not need database to store files, our daily, for our personal use in our computers. We student did not need to have database, but in large companies where there's a huge amount of data, so many people are studying, students records, teachers records, employees records, so there we need to store them. And that is database where all everything is stored. And next comes database system. So what is this database system? Database system is a interface. It is acting as an interface between the database and the user, like a software. So database plus software means which is having some functionalities, like you can manipulate the data, you can create tables, you can delete tables, you can alter tables. So database plus those functionalities forms the database system, and it has many advantages like redundancy. um, then security is also there. No, not everyone can access the same type of data. Like there's a separate profile for students, separate profile for teachers. So, and database is far more useful in compared to file old system. Okay. Uh, Very simple question. What is the difference between where and having clause? uh, where clause is means we give conditions when we need to give conditions in finding records, then we use where. And I have actually not used having, so I don't know what is having. Every time I use where. Okay. Why do you want to join our company? uh, Sir,
it is a multinational company, and I think that it will give boost to my career, and I will learn many things, many big projects, and from my seniors, from some people, if I have some people like as yourself by my side as a leader or as a superior, then I will grow a lot. uh, so that's why for my career boost, and I will get a great exposure if I join such a big company as yours. That's why I want to join your company. Have you done any project or certifications or internships? Yes, sir. I have done an internship for 3 months in national from National Informatics Center on controller view model. Okay. Um, any projects? Mm, any projects? I- Means I have done for small projects, but this one is significant. Okay. Um, these days, most of the IT companies, including ours, work on Java, and at the same time, for competitive coding and machine learning AI in this metaverse of data, uh, artificial intelligence and machine learning is a key skill. For that, you need to have a knowledge of Python, right? But why have you restricted yourself to C and C++ only, being a computer science engineer? No, sir, actually, I'm learning, and I think that C is the father of all languages. Like, if you know C, then you can, like, learning any other language is just a matter of days. So, of course, Python has their own benefits, and it's exciting to learn as well, Python. Uh, but C brings concept, and many quick learn means quick processes use C and C++, but I'm learning also. I'm side by right now. I'm going into Java and other things. So I will not restrict this much, but I think that it's a foundation. It's a base. C and C is base, but I will learn, and I'm learning also Java. JVM. Yeah, Java Virtual Machine. Okay, and what is the use of JVM? It actually turns the code into byte code. It's What our written code into bytecode? yeah bytecode, and then the compiler. Java is a interpreter as well as compiled uh, language. So first the interpreter converts our code into high level language code into bytecode, and then the compiler converts the bytecode into machine code. So Okay. Could you please tell me something about your strengths? yes, sir. I feel that I'm resilient. Whatever may come, I stood up every single time. And I'm also disciplined. Like I have maintained a routine, my personal routine. So I have discipline, and I can convince people because I'm polite and I'm patient. Uh, that's why. And I have problem solving skills as well. You have a 9.4 aggregate CGPA after sixth semester. So So obviously you are good at academics. So why don't you join some master's program, maybe MTech or MBA, have a higher degree, and then look for jobs with higher package and even better opportunities than our company? Sir, I want to stand by my own feet. Financially, I want to be dependent. Mean sorry, independent. So financially, I want to be independent, and I Financial. can do well as well. I can learn in your company as well. So Suppose you are not selected for IT job. So what would be your backup plan? mm, I will prepare myself more and more. Means I if I'm not selected, then I will try to find where I'm doing wrong, and I will work on that, and I'm sure that I will get a job, IT job only.
Since you have to be financially independent, right? So suppose there is some delay in joining from our side and our company declares that we'll give you joining after 1 years. Okay, in the meantime some other company comes and offers you the same package with the same job role, or maybe slightly greater package and immediate joining, of course. Then in such a situation, what would be your reaction? I will. I think I will join the one which has come. Like I will not wait because time is precious for us all, and a company which cannot value an employee's time, then I will See, take the other job. company never wants your joining to get delayed, but company has many onboarding procedures, has a number of employees to deal with. So it happens many a times that your joining might be delayed, right? Okay. So there will be many situations in the company where client will be killing your time. You would feel like running out, but since he is or she is your client, you have to bear it up with him. You can't be like, it's my time. If you do not value my time, I won't submit your project or I won't do your task, right? So okay, which social media platform do you use the most? Um, I use WhatsApp for daily chatting and Instagram for clicking photos, uh, and Facebook for connecting. Generally, means those who are not in WhatsApp, I connect with them on Facebook. Okay. Suppose we plan a marathon at our company, the running marathon, okay, and we want many people to join our campaign. Okay, Hmm. so you have been made the social media head for the same, and you have to promote this campaign amongst your friends, colleagues. So, which platform would you choose, and how would you grow this campaign in a better way? Yeah, first of all, I will open a page in Facebook, and there all the updates will be given, everything, the details about the events will be given, and I will also create a WhatsApp link. Like those who are interested to join and become more close and connected, they can join the WhatsApp group. And simultaneously, I will also open an Instagram page of running marathon, and then I will check the response after 1 week. I will check the response and I will analyze which platform is attracting more interested participants, and then I will take the forward steps. Okay, where do you see yourself 5 years from now? From 5 years, I see myself, uh, because I love traveling, so uh, so I will leading a project, an international project, and mentoring people, like, yeah, freshers as well, and helping the upcoming generation with my whatever I will be learning, and with my experience. Okay. Suppose I give you some time, obviously this is your eighth semester, seventh or eighth semester maybe, Yes. and your joining will come in around May. Okay, so you have approximately 7 months from now. So how you are going to utilize this time? Suppose you get selected in our company, and how are you going to utilize this time? Utilize, I will learn. I have an interest in cloud computing, so I will learn cloud computing and the other coding skills which the companies require. Those things also I will learn, um, and side by side, uh, I will do the things. Suppose if I have posting somewhere else, then I will spend some time with my family and friends during that time, 7 months of time. Yeah. Any issues in the location or night shift or bond? No, sir. No issues. Okay, Ritika, it was nice talking to you. Your result will be Okay. communicated shortly via email. Wish you all the best. Okay. Thank you, sir. ओके रिकिता, यहाँ पर मॉक जी, इंटरव्यू सर. खत्म होता है, तो हाँ. अभी एक बार जल्दी से फीडबैक डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, सर. बिफोर दैट, सिंस यू आर अ मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स स्टूडेंट,
और सर। आप कोर्स का मैंने आपका प्रोग्रेस भी देखा, आपने काफ़ी सारा कोर्स को यूज़ भी किया है। यस तो सर। क्या सर आपका बहुत हेल्प हुआ है आपका कोर्स, मीन्स टीसीएस में हुआ है, बिकॉज ये 3 महीने से मैंने सिर्फ आपका वीडियोस ही देख डाला सब। सो टीसीएस और एक कंपनी में, मीन्स कोलकाता में मैं रहती हूँ, सो कोलकाता में भी हो गया है एक कंपनी, सो थैंक्स टू यू। अच्छा, कोर्स की कौन-सी ऐसी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, सो दैट हमको भी आइडिया मिले और हम और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें? हाँ सर, मीन्स पहले मेरा प्रॉब्लम हो रहा था कि बहुत कुछ प्लेसमेंट प्रिपरेशन बहुत स्कैटर्ड था, लिस्ट बहुत स्कैटर्ड था, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, मीन्स सब कुछ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, तो कौन ठीक है और कौन गलत है, वो ही हम लोग को कंफ्यूज कर देता था। तो मेरा एक फ्रेंड मीन्स अभिरूप माइती, वो मुझे रेकमेंड किया कि रिकिता तू इस सर का ज्वाइन, तू एकदम सर को विश्वास कर, एकदम आंख बंद करके तेरा हो जाएगा। तो मैं बहुत टेंस थी, बट वो आया और वो ही रेकमेंड किया आपका कोर्स, तो फिर मैंने परचेज किया अराउंड जून, आई थिंक जुलाई, जुलाई मिड, मीन्स टीसीएस के 1 महीने पहले, टीसीएस एग्जाम का 1 महीने पहले मैंने इनरोल किया। और सच में मीन्स इतना एडिक्टिव हो गई थी मैं, मीन्स डे बाय डे मैंने मैम को भी बोला कि मैम मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया है, मैंने अभी सर का ही लेक्चर्स देख रही हूँ। सो सबसे अच्छा फीचर है कि सब एकदम एक जगह है सर, और आप बहुत मजाकिया भी है, ह्यूमर भी है, सो बोर नहीं होता लगता एकदम। तो हाँ, थैंक यू। ये ग्रेट भाई, वी विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, ये तो हो गया कोर्स का बात, लाइक अभी कोर्स का आपने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया है। एक जो फीचर रह गया था वो था ये मॉक इंटरव्यू। हाँ ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यू जो आपने डेट अपने लिए डाली होगी उसमें स्लॉट नहीं मिला, उसमें आपकी भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है, बिकॉज हम बच्चों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे भाई पहले से बुकिंग करके रखो, करके हाँ रखो। सर। हाँ और बच्चे लास्ट मोमेंट के लिए वेट करे, और अभी ऐसा था कि दिन में 15-15 इंटरव्यूज ले रहा हूँ मैं अभी डेली, हाँ और सर। पूरा स्लॉट भरा हुआ है। आपको पता होगा पिछले 1 महीने से कोई लाइव क्लास नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, राइट? तो ये सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बार मॉक इंटरव्यू का लाइक कैसा क्या फीडबैक रहा, वर्थ इट था ये, या ऐसा था कि सर ठीक है, मतलब ओके ओके? नहीं सर, एकदम वर्थ इट था, हम्म। एकदम 100%। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आपकी टेक्निकल स्किल्स, आपका इंट्रोडक्शन, प्लस आपका एचआर भी पूरा, प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात कर ली, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, हाँ सर। मैनेजरियल सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी, तो ओवरऑल पूरा आपको जज कर लिया ताकि हाँ। अकॉर्डिंगली मैं फीडबैक आपको दे पाऊँ। ठीक है? हम्म, तो और उसके अलावा आपको स्टार्टिंग में वेट भी करना पड़ा होगा 15 से 20 मिनट, तो वो प्लान्ड होता है एक्चुअली। लाइक ऐसा है कि ओ अगर मान लो अच्छा। 5:45 पे इंटरव्यू लेना है तो 5:30 का टाइम देते हैं, बिकॉज हम्म। एक्चुअल इंटरव्यू में भी डिले होता है 15-20-25 मिनट का। तो स्टूडेंट्स के अंदर ना पेशेंस नहीं होता, बैक टू बैक हमको मैसेज करते हैं सर वो पैनलिस्ट नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसा। तो एक पेशेंस डेवलप हो जाता है बच्चों के अंदर, तो एक रियल एक्सपोजर आपको देना चाह रहे थे। तो अभी एक बार मैं तो फीडबैक बताने वाला हूँ, और जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ। थोड़ा सुन के यस बुरा सर। भी लगेगा, आपने इतना नहीं तारीफ नहीं। किया और आप बोलोगे कि सर बदले में, क्योंकि मैं एकदम रूड फीडबैक देता हूँ, बिकॉज ठीक है तभी एकदम सर। इम्प्रूवमेंट होता है, राइट? तभी हाँ हाँ हाँ, एकदम। बिकॉज अभी आप मेरे को 4 गाली दे दोगे, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं कि सर, गाली नहीं दूंगा। हाँ। दूंगी। तो अगर वही, हाँ अगर मैं अभी प्यार से बोलूंगा, जब सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आप मेरे बारे में बुरा ही करोगे। तो इसलिए पहले सर। आप हाँ, मेरा एक सिस्टर भी है, मीन्स वो भी एकदम सब बोल देता है मुंह पर, मीन्स एकदम सुगर कोट नहीं बोलता, सब मीन्स जो भी मैं करूँ सब में उसका क्रिटिसिज्म तो आएगा ही, तो इसलिए मैं यूज टू हूँ, आप मेरे भैया जैसे है सो आप। चलो, मतलब आपने कवर करने के लिए सब भैया बुला दिया कि ज्यादा डांट ना लगाओ, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी पहले ना आप फीडबैक दो, बिकॉज आप अपने बेस्ट फ्रेंड अपने बारे में ज्यादा जानते हो। तो आपको क्या लगा कि क्या चीजें आपने अच्छी की और कहाँ पर आपको लगा कि मैं इम्प्रूव कर सकती थी? सर आई थिंक मुझे प्रोजेक्ट और थोड़ा सा करना चाहिए, कुछ अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट,
तो वही मैं काम करूंगी, और भी ज्यादा स्किल्स, कोडिंग, वो सब और भी ज्यादा करना होगा ठीक है। टेक्निकली। पहले मैं ब्रॉडर बात करूंगा, फिर माइन्यूट लेवल पे लेके जाऊंगा। इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है? इंटरव्यू का पर्पस पूरा पर्सनालिटी को जज करना कैंडिडेट का, और वो अगर इंटरव्यूअर को पता है क्या पर्पस है। आपका पर्पस क्या है इंटरव्यू एज अ ओ अच्छा। स्टूडेंट? व्हाट इज माय पर्पस? व्हाट इज इंटरव्यू फॉर मी? डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू फॉर मी? I need to sell myself to the interviewer. So, नो, uh, purpose is to get placed in the company for which I am giving interview. yes. Purpose is not to showcase your technical skills, not to showcase your soft skills, not to showcase how good you are, right? Not to sell yourself. These are the procedure or maybe the byproducts, right? Ultimate purpose is उस कंपनी में प्लेस्ड होना Sure. है ना। कंपनी ऐसा बोल दे, यार आपने इंटरव्यू दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको बढ़िया सी रेटिंग दे देंगे और 500 रुपए का शगुन का लिफाफा दे देंगे, चलेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं चलेगा ना। अल्टीमेटली आपको प्लेस्ड होना है उसमें। मैंने आपका पूरा इंटरव्यू लिया, आप मुझे एक बार भी बता दो, आपने इंटरव्यूअर में बोला हो कि मुझे आपकी कंपनी ज्वाइन करना है। मैंने जब सामने से पूछा व्हाई शुड आई हायर यू, तब आपने बोला, या व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, तब आपने बोला कि मुझे आपकी कंपनी ज्वाइन करना है बिकॉज सो एंड सो रीजन है। वो पार्ट इंट्रोडक्शन में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया? Sure. पहली चीज। दूसरी, मैं आंसर दे रहा हूँ। डीबीएमएस डेटाबेस और एसक्यू, आप नोट मत करो, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, टेंशन नहीं लो, सब मिलेगा। ठीक है। अब आप आपने मैंने आपसे पूछा भाई डेटाबेस समझाओ, एसक्यूएल समझाओ। आप समझाने लगे। पहले बताओ मैंने डेटाबेस एसक्यूएल क्यों सीखा? क्योंकि 99% ऑफ द कंपनीज इंक्लूडिंग योर्स आज के समय डेटाबेस पर वर्क करती है, एसक्यूएल क्वेरीज पर काम चलता है। तो अगर कल के दिन आप मुझको एसक्यूएल पे रखो तो मैं आपकी कंपनी के लिए एक एसेट रहूं, ना कि एक लायबिलिटी, इसलिए मैंने सीखा। गेटिंग माय पॉइंट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है सर? बिल्कुल, आज के समय एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। जहां देखो वहां ऑब्जेक्ट्स हैं सर, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स सी से पूरी दुनिया चल रही है। और आपकी कंपनी में या किसी भी आईटी कंपनी में मुझे ग्रो करना है, स्पेशली आपकी कंपनी में मुझे जाना था, मुझे ग्रो करना था, और बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आप एक जो कंपनी में जो कोडिंग होती है उसको आप नहीं कर पाते हो। ये मेरे सीनियर्स का एक्सपीरियंस है, उनसे मैं टच में रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया। क्योंकि मुझे आपकी कंपनी में जाना था इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखी, राइट? सी लैंग्वेज सर, अगर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा, बेस मजबूत नहीं होगा, तो हम जो आप हमको ट्रेनिंग दे रहे हो उसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तो प्रोजेक्ट्स में जो भी डिफिकल्टीज एरर्स आने वाले हैं हम उनको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली हम आपकी कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होंगे रेदर देन अ एसेट। क्योंकि मुझे आपकी कंपनी में जॉब करनी है, यही मेरा जीवन का पहला और आखिरी सपना है, इसलिए मुझे आपकी कंपनी में जाना है ना। समझ रहे हो? हाँ सर। आपके आंसर्स वही थे, मेरे आंसर्स वही थे, मेरे दोस्तों के भी आंसर्स यही थे। मेरे से ज्यादा टेक्निकल नॉलेज थी, 2 या 3 कंपनीज में खुश है, मैं 9 कंपनीज तक गया। वाई? बिकॉज मेरे मन में इंटरव्यू का पर्पस क्लियर था। मुझे अपनी टेक्निकल स्किल्स नहीं शोकेस करना, सॉफ्ट स्किल्स नहीं शोकेस करना, मुझे सिलेक्ट होना है, उस कंपनी में प्लेस्ड होना है। प्लेस्ड होना। अल्टीमेटली यस और नो का बटन क्लिक कौन कर रहा है? ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या होता है? इमोशंस। आपको उनके इमोशंस के साथ खेलना है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग सब बता के आएंगे, आपको क्यों सिलेक्ट करे। गेटिंग माय पॉइंट? दिस शुड गो इन योर माइंड। व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? मैंने अपने सीनियर से बात की, आपकी कंपनी में ऐसा ऐसा काम होता है, तो फॉर दैट आई थिंक अ इंडिविजुअल शुड हैव ऑल दीज क्वालिटीज। और पिछले 6 महीने 1 साल में मैंने इन पर वर्क किया है और अपने अंदर ये क्वालिटीज डेवलप की हैं विद द हेल्प ऑफ अ फेक स्टोरी यू कैन मेक। मैं एक टीम लीडर हूँ, मेरे कॉलेज में बास्केटबॉल चैंपियनशिप थी या ये चैंपियनशिप थी, और बहुत शॉर्ट नोटिस में बताया गया था
मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं लीड करूंगी और हम वो मैच जीत गए। तो जस्ट कोई भी स्टोरी बनाने का ना यार, वो जाके थोड़ी ना देख रहा है तुम्हारे कॉलेज में। हाँ। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। अब अगले 6 महीने 7 महीने में क्या करोगे? मैं ये सब चीजें सीखूंगी, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सीखूंगी? नहीं, मैं अपने सीनियर से बात करूंगी, रिसर्च करूंगी कि अभी फिलहाल जो रिसेंटली पास्ड आउट स्टूडेंट्स है वो किन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग किन चीजों पर दी गई है, क्या क्या डोमेन्स पर आपकी कंपनी वर्क करती है। आपकी वेबसाइट स्क्रॉल करूंगा, जो भी क्लाइंट्स हैं, अगर इफ पॉसिबल किसी क्लाइंट से मेरी कम्युनिकेशन हो पाई वो करूंगा, नीड्स को समझूंगी और अकॉर्डिंगली मैं चीजें सीखने वाली हूँ, है ना। तो आंसर्स वही है, सब वही आंसर्स देने वाले हैं, बट हमको बाकियों से डिफरेंट होना है। तो अगर आपने 5 से 6 बार उनको ये बोल दिया ना, मुझे आपकी कंपनी में जाना है, ट्रस्ट मी, और कोई ये नहीं कर रहा होगा, किसी की दम नहीं है आपको रिजेक्ट कर पाए। मार्क माय वर्ड्स, किसी की दम नहीं है आपको रिजेक्ट। अगर 100 में एक को भी सिलेक्ट करना होगा ना, आपको करेंगे। फर्क नहीं पड़ता यार कितने प्रोजेक्ट किए, कितनी इंटर्नशिप किए, सब सिखा देंगे तुमको ट्रेनिंग में, लेकिन बंदे में वो जील होना चाहिए, कंपनी के लिए वो प्यार होना चाहिए। समझ रहे हो आप इस बात को? तो दिस इज व्हाट वाज लैकिंग इन योर आंसर्स। ऑब्वियसली टेक्निकल नॉलेज की कमी थी, वहां पर इंप्रूव किया जा सकता था। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आ रहे, इट्स गुड टू से नो कि सर मुझसे नहीं हो रहा है या मुझे नहीं आता, रेदर देन ब्लफ करें हम, राइट? है ना, बिकॉज आपका एक इंटरव्यू है, उनका 20वां चल रहा हो सकता है, लाइफ में ना जाने कितने इंटरव्यूज लिए हैं, तो दे नो वेयर यू आर ब्लफिंग देम और गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। रेज्यूमे इज गुड इनफ, और उसमें बस मुझे एक जो छोटा सा इम्प्रूवमेंट लगा वो ये था कि आपका जो कॉलेज है उसकी लोकेशन हमेशा लिखा करे। दिस शोज कि आपने लाइफ के रिसेंट 4 इयर्स यहाँ पर बिताए हैं, तो आप उस जगह के लिए अडेप्टिव हो। तो कल के दिन अगर कंपनी में कोई बढ़िया प्रोजेक्ट आपकी लोकेशन पे मिल रहा है तो आपको उस लोकेशन पे जॉब दे सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हो गई हैं। थोड़ा सा बस आप इसमें नीचे डिक्लेरेशन लिख देना, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, दैट्स इट। बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। तो टेक्निकली थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। एचआर के आंसर्स वर गुड इनफ, इट कैन बी इवन बिट डिटेल्ड, ओके, है ना। और ये कभी भी नहीं बोलना है, पहले मैंने पूछा आपको मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है, आपने बोला कंपनी बहुत अच्छी है, फ्रेशर की रिस्पेक्ट करती है, फलाना ढिमका ये वो, फिर आपको बोला कि यार आपको कोई दूसरी कंपनी ऑफर कर रही होगी तो आप चले जाओगे क्या, है ना। आपने बोला कि आपको टीच करना पसंद है ना, आपको लोगों को मेंटोर करना पसंद है, ठीक है। आपने इसमें लिखा भी आप प्राइवेट ट्यूशंस देते हो। आप मान लो 11th क्लास को पढ़ा रहे हो, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो आपको लग रहा है कि यार 12th भी मेरे से ही पढ़ेगा, वहीं दूसरा बच्चा है जो लगेगा यार ये तो भाग के चला जाएगा, आप किस पे ज्यादा फोकस करोगे? जो रहेगा। है ना। तो फिर कंपनी आपको क्यों सिलेक्ट करे? पीछे क्यू में 20 लोग हैं जो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि मुझे आप सैलरी भी मत देना तो भी मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूँ। सी, हमारी स्किल्स अच्छी है, हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाना है, वो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन इंटरव्यूअर में बिल्कुल, इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल शांत विनम्र रहो, हम कोई नहीं है भाई, हमको आपकी कंपनी में जाना है, टू हैव अ जॉब रोल, दिस इज द की रूल, है ना। गॉट इट? कुछ क्लैरिटी मिली हाँ थोड़ी? सर, आगे हेल्प होगा इससे, एकदम। है ना। ये सब कोई नहीं बोलता एक्चुअली, सो सब लगे रहते हैं यूट्यूब पे भी देखा, ये टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको कर लो इनको कर लो, इन सब चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, अगर सिर्फ तुम्हारी टेक्निकली चेक करनी होती ना बाबा, 20 मिनट का एक एमसीक्यू टेस्ट लेते, करोड़ों बच्चों का पेपर जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ उसी में 20 टेक्निकल क्वेश्चन नहीं ऐड कर सकते थे क्या? बताओ, हाँ। है ना। तो दिस इज जस्ट अ करिकुलम जो चल रहा है, बट द एक्चुअल पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज बियॉन्ड योर टेक्निकल स्किल्स, राइट। एक 20 मिनट आपको अलग से दे रहे हैं भाई, उनके एक एक मिनट की वैल्यू है, तो कुछ तो आप में देखने आए होंगे ना,
और कभी भी ये मत सोचना मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कंसिडर योरसेल्फ कि आप सिलेक्ट हो गए हो, मैनेजर के साथ एक 1-to-1 मीटिंग हो रही है, उससे कॉन्फिडेंस आता है। इन योर कंपनी मत बोलो, इन आवर कंपनी। दिस शोज योर कॉन्फिडेंस। आपसे पूछा गया था कि अगर आपकी आईटी में जॉब नहीं लगी बैकअप क्या लोगे? 100% सर जॉब लग जाएगी। इफ नॉट योर कंपनी देन समथिंग एल्स। दिस विल शोकेस योर कॉन्फिडेंस। उनको ये बताना है कि आई एम मेंट फॉर योर कंपनी, आई एम एसेट फॉर योर कंपनी। अगर आप मुझे नहीं सिलेक्ट कर रहे हो तो मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है जनाब। ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकली सॉलिड होना जरूरी है ना? सर वो वाला क्वेश्चन में मैंने बोला था कि मैं अपना वीकनेस पे जो जिसकी वजह से नहीं हुआ उस पे वर्क करके दूसरी कंपनी में अप्लाई करूंगी, तो मीन्स वो पार्ट बोलना चाहिए कि मेरा वीकनेस है तो इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ। उसको आप पहले तो ये बोलो कि सर हाँ। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट विद दिस स्किल सेट, आई विल गेट प्लेस्ड इन योर कंपनी। इफ नॉट देन आई विल ट्राई अगेन, आई विल वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ। We have a 6 months criteria. After 6 months, I can reapply for your company. I'll work hard. I'll make myself fit. I'll take feedback from this interview, and I'll apply again after 6 months. Right? तो ये चीज उनको भरोसा दिलाना है. And if there is no vacancy in your company, obviously I won't sit idle. I'll apply for some other IT company. I'll work there. I'll then switch to your company after 2 or 3 years. है ना? इससे क्या हुआ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, आप नहीं तो कोई और मेरे को ले जाएगा. ठीक है, आप अभी नहीं लोगे तो 2 साल बाद में फिर आने वाली हूँ. दिस शोज योर डेडिकेशन फॉर द कंपनी, योर कॉन्फिडेंस. एक तीर से 2 निशाने मारे. लोग बोलते हैं यार सर आप अभी तो बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है ना तो वहां घबराहट में कुछ नहीं निकलता. यार ये सब बुलशिट है. अगर अंदर से पर्पस क्लियर है ना कि मुझे ये इंटरव्यू क्लियर करना है ना, अंदर से वो एक भोलापन है. अगर आप एकदम वो बनोगे, क्या बोलते हैं उसको, चतुर बनोगे ना, तो इंटरव्यूअर आपसे 2 गुना ज्यादा है. डोंट ट्राई टू ब्लफ देम. वो अंदर से सच में होना चाहिए. भाई जब मेरा टीसीएस का इंटरव्यू था तो सच में मेरे अंदर था कि यार आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी. एक्सेंचर का था तो सच में यार दिस इज अ गुड कंपनी, आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी. उस समय मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे पास 4 ऑप्शंस और हैं या मेरी 3 कंपनी में ऑलरेडी हो चुका है. 9th इंटरव्यू में मेरे से पूछा था, इज दिस योर फर्स्ट इंटरव्यू? यस सर, दैट्स व्हाई आई माइट लुक अ बिट नर्वस टू यू. है ना? ठीक है, चलो तो अभी इसको एंड करते हैं. कुछ सर पूछना? और एक मीन्स छोटा सा ही क्वेश्चन. मीन्स आपने बोला कि अगर मुझको कुछ नहीं आता तो मैं इंटरव्यू को बोल दूं एकदम. कुछ नहीं आता नहीं, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, हाँ वो उसमें उसका नहीं. आंसर नहीं आ रहा है, तो हाँ. यू कैन से राइट नाउ सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई हैव लर्नड दिस बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, एंड सिंस दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू आई एम बिट नर्वस बट आई विल श्योरली लर्न दिस एंड गेट बैक टू यू. इस तरीके से. हाँ हाँ सर, कुछ कुछ इंटरव्यूअर ऐसे है कि तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो, तुम ट्राई करो, मीन्स गिव अप क्यों कर रहे हो इजीली, अगर ट्राई वो करो ट्राई. सामने से बोल रहा है ट्राई करो तो ठीक है अच्छा. ना, बट ट्राई करने का भी ये होता है कि आप गलत डायरेक्शन में ही अगर जा रहे हो तो फिर तो नहीं चलेगा ना. ओके, या तो पहले ही बोल दो सर आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिकॉल बट लेट मी गिव इट अ ट्राई, फिर बोल, तो एटलीस्ट उनको पता रहेगा. अपन विथ कॉन्फिडेंस गलत आंसर बोल रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा. राइट? सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू. मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी. यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है, मॉक इंटरव्यू बाय यश जैन सर. जाकर के अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें. थैंक यू सो मच.